सबसे पहले आप ये बताइए एक्यूपंक्चर के प्रिंसिपल्स लोगों को बताइए। This is देखिए both going to बेसिकली, be in English and Hindi mix because we हाँ, have a doctor's audience as well as the public audience. What are हम्म, the principles of acupuncture and why do you call it as बेसिकली, a scientific acupuncture? हाँ, बेसिकली क्या है कि जो ये एक्यूपंक्चर साइंस थी, ये तकरीबन 2000 साल पुरानी साइंस मानी जाती है, जो कि ट्रेडिशनली हमारे वेदास में भी सुई भेदन जो है वो मेंशन्ड है एज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। और वो सुई भेदन जो है वो भीष्म पितामह भी सुइयों की शैया पे लेटे थे, और जब वो सुइयों की शैया पे लेटे थे तब वो सुइयों के ऊपर लेटे हुए थे, फिर भी वो जिंदा रहे इतने समय। तो कहा जाता है कि वो बेसिकली एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर ही उनका स्टिमुलेशन हुआ था और वो हो रहा था। तो इसलिए ये साइंस जो है ये भी, इसका ओरिजिन जो है ये इंडिया में ही माना जाता है, क्योंकि हमारे वैदिक ट्रांसक्रिप्शन में भी इसका मेंशन है। अब जब तकरीबन 1970s की बात है, जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका निक्सन जो है वो चाइना गए, तो उन्होंने वहां पर जाके देखा कि एक्यूपंक्चर को तो बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है बीमारियों के इलाज में, और तब तक वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके बारे में कोई नॉलेज थी ही नहीं, बहुत कम थी। ये वहां से प्रोग्रेस होता हुआ मिडल ईस्ट और जापान में, कोरिया में काफी प्रचलित था, बट यूरोप के में अंदर और अमेरिका में अभी तक इसका प्रचलन नहीं था। सो क्योंकि उनकी एक टीम साथ में गई थी डॉक्टर्स की भी, तो उन्होंने सारा रिसर्च किया वहां जाके, और उन्होंने ये पता लगाया कि एक्यूपंक्चर वाकई ही बड़ी एक कामयाब विधि है, जिससे कि कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तब उसके बाद ही एक्यूपंक्चर जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में आया है। और इसका साइंटिफिक जो जिसे कहते हैं हम, क्योंकि बेसिकली हम लोग सब साइंस के हैं, तो जब तक हमें एक एविडेंस बेस्ड चीज नहीं मिलती है तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं। सो 70 से ये शुरू हुआ है इसका प्रोपोगेशन, और आज पबमेड पे अगर हम जाते हैं और साइंटिफिक स्टडीज देखते हैं, तो इतनी साइंटिफिक स्टडीज अब आ चुकी हैं एक्यूपंक्चर के ऊपर कि WHO ने खुद ये रिकॉग्नाइज किया है कि आफ्टर एलोपैथी द सिस्टम ऑफ मेडिसिन practiced worldwide the most is acupuncture. Even you will be surprised to know. So number two after allopathy is acupuncture, acceptability wise as well as practice wise. So इसका बेसिक श्रेय जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी को, जिन्होंने रिसर्च करी, ये पता लगाया कि भी कैसे काम करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेन है, अब हम कहते हैं जी पेन में एक्यूपंक्चर बहुत कामयाब है, बट वो एक बड़ी लिमिटेड सी उसकी यूटिलिटी है। ये कह देना कि सिर्फ पेन में ही कामयाब है बहुत गलत होगा, फिर वो एक साइंस नहीं मानी जाएगी। साइंस वही होती है जो कि कई बीमारियों के अंदर और सब बीमारियों में कामयाब रहे। तो पेन में तो होता है कि भाई जैसे ही हमने नीडल लगाई, और बड़ी महीन सी पतली नीडल्स होती हैं, ऑलमोस्ट हेयर थिन नीडल्स होती हैं, जो कि एक्यूपंक्चर पॉइंट स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं, उनके ऊपर लगाने से एक सिग्नल हम ब्रेन को भेजते हैं, और ब्रेन से ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं, विच आर एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, which are known as the serotonins, which are what are known as the pain killing substances. एंड धीरे धीरे इनकी लेवल बढ़ती जाती है विद ईच सेशन, एंड पेशेंट्स गेट रिलीव फ्रॉम द पेन। अब दूसरा आता है कि इनका रोल जो है पैलिसिस में बड़ा अच्छा माना जाता है, हेमीप्लीजिया में, पोस्ट हेमीप्लीजिक पेशेंट्स जो आते हैं उनमें भी हम बहुत यूज करते हैं। उसमें इनका रोल माना जाता है क्योंकि हम इसमें कुछ मोटर पॉइंट्स होते हैं और मसल बिल्डिंग पॉइंट होते हैं, तो जब हम उनको स्टिमुलेट करते हैं, और इसके लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहते हैं, जिसमें कि एक महीन से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करंट भी नीडल्स के थ्रू पास करते हैं, और उससे जो है उस मसल के अंदर मसल बिल्डिंग इफेक्ट आता है, और वो मसल बिल्डिंग इफेक्ट से वो धीरे 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 मसल जो है वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। ऐसे ही ऑटो इम्यून डिजीज है, डॉक्टर के अग्रवाल ने खुद बताया क्रोन्स डिजीज है इनको, मुझे पता ही नहीं था, मेरे कुलीग हैं, मैं इनको कल से ही पेशकश करता हूँ, मेरे पास आइए आप, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ इनको मैक्सिमम 6 महीने से लेके 8 महीने के अंदर अंदर इनकी क्रोन्स डिजीज क्योर हो जाएगी। मैं जब वर्ड क्योर यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है अगर ये इनका अपना कोलोनोस्कोपी कराएंगे ये दोबारा से, तो वहां कोई अल्सर्स नजर नहीं आएंगे। इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इस ट्रीटमेंट के, क्योंकि क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी क्रॉनिक डिजीजेज हो जाती हैं,
इसीलिए ये समय भी इतना ले लेती है। अगर यही बीमारी हमारे पास पेशेंट लेके आए और अर्ली आ जाए तो उसके रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं और पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। अब होता क्या है कि पेशेंट अमूमन जो है, डॉक्टर्स खास कर बात करूंगा मैं, मेरे अपने अस्पताल के कई डॉक्टर्स हैं जो मेरे पेशेंट्स भी हैं, वो आते हैं इलाज कराने जिस वक्त वो सब तरफ से हार जाते हैं। अब जब हारा हुआ इंसान आता है तो तब तक वो कॉर्टिसोन्स भी खा चुका होता है और कई किस्म की वेस्टर्न मेडिसिन खा चुका होता है। और हमें खुद पता है, ऐसा नहीं है कि केके को नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है कि उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। माना मेरा वेस्टर्न मेडिसिन, मैं भी वेस्टर्न डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छा सिस्टम है, कई बीमारियों में लाजवाब है। हड्डी टूट जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आईसीयू में पेशेंट एडमिटेड है, उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है वेस्टर्न मेडिसिन का। बट जहां पर हम लाइफस्टाइल डिजीजेस देख रहे हैं आजकल, इंसोम्निया देख रहे हैं। अब मेरे पास आज डॉक्टर से बात हो रही थी कि भाई कोविड में क्या रोल है। अब हमारे पास इस वक्त पेशेंट्स जो हैं, और ऑन एवरेज रोज 4 से 5 पेशेंट्स में ऐसे ट्रीट करता हूँ जो कि पोस्ट कोविड इंसोम्निया के लिए आ रहे हैं, जिनको नींद ही नहीं आ रही। फियर अभी भी लगा हुआ है कि भाई पता नहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगा कहीं मेरे को कोविड, और अगर हो गया तो मेरे बच्चे तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे, क्योंकि जब मेरे को कोविड हुआ था उस दौरान भी वो अलग कमरे में मेरे को पटक दिया था। मैं 70 साल की औरत हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है मेरे साथ, तो स्लीप हैज गॉन फॉर अ टॉस, एंड इन स्पाइट ऑफ गिविंग हर ट्रैंक्विलाइजर्स द स्लीप वाज नॉट कमिंग बैक। So what we do is basically, the principle is very simple, that when we put these needles, we actually activate the peripheral nerves and muscles through the sensory stimulation. And this further modulates the parasympathetic nervous system. And we all know that a major regulator of sleep is the parasympathetic nervous system. And also, we stimulate the release of melatonin. So, all these factors help in getting the patient good sleep. So, the good part today is, and that is where I am coming to, that acupuncture is no more voodoo. It is a completely scientific based system of medicine. And why I say, a lot of people say कि जी इसको भी हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में डालें, मैं कहता हूँ नहीं। मैं थोड़ा सा ये ऑल्टरनेट मेडिसिन की वर्ड से ही वाकिफ नहीं हूँ अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एनीथिंग अदर देन एलोपैथी वी कंसिडर एज ऑल्टरनेटिव, we should call it as good medicine. Anything which is good for the patient and anything which is good for healing of a person should be called good medicine and not alternate medicine. So that we should be able to popularize this science also, and more so amongst doctors. Why? Because I find wherever I have traveled all over the world, I have been practicing for 38 years in New Delhi now. 22 years I have been the head of department of acupuncture at Gangaram Hospital, which I developed first time. So I have realized that as more and more I've traveled, I've found that a large number of people in my medical fraternity also, I have been using acupuncture as an additional tool in their practices. And why? Because suppose a patient has got nausea or vomiting or morning sickness, simple as that, and you want to give immediate relief, and we do not want to use any drugs. So one single needle at one acupuncture point can immediately give relief from morning sickness. So why not do that? And that fear of the needle is also no more now. Why? Because as science has progressed, so has science progressed in acupuncture. So today we have got needleless techniques. One of the techniques we use in needleless technique is laser acupuncture, wherein we use soft lasers at acupuncture points. जो मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कि कहते हैं सर हमें नीडल तो लगवानी ही नहीं किसी तरीके से भी, क्योंकि हमें डर लगता है। जबकि हम उनको जब एक नीडल लगाए थे तो कहते हैं चुभ गई नीडल। हमने कहा भाई चुभ गई है तो लग गई अब, और उसके बाद क्या करना है जी, भाई आधे घंटे तक लेटे रहना नीडल लगा के, कुछ नहीं करना होता। तो कंडीशंस as wide and as ranging from migraines to frozen shoulder to neck shoulder pains, commonest problems, cervical spondylosis, mid back pain, asthma, rhinitis, sinusitis, then all type of pains, right from hip arthritis to knee osteoarthritis to low back pain to sciatica, you name it, and acupuncture has a treatment for that. And all this has been done over a period of many years,
that scientific evidence has been accumulated, random control trials have been done. Because the hallmark in our modern medicine is that unless there is a random control trial, a sham control trial, we do not accept it. So our Western colleagues also all over the world who are involved into acupuncture have done such trials and successfully shown that they are working very well. I recently published my work in the North American Journal of Oriental Medicine, published from Canada, on the role of acupuncture in my practice in the last about 6 months, in which I have treated patients with post COVID cough, post COVID fatigue, cognitive issues like memory lapses, and post COVID digestive symptoms like bloating, nausea, irritable bowel syndrome, all such symptoms. And I have achieved very good results. Although the number of patients are very few in each category, but the results were almost 70 to 80% success. So, what I'm trying to say is that every system has its limitation. So we should try and understand that within that limitation, if there is a system which is so effective, we should try and work on it, and so that it is able to help our own patients. Because at the end of the day, a patient is coming to us for relief, whether he's coming to us for relief from pain, or from a sleep problem, or from a headache, or for a neck shoulder pain. It could be any issue, but as long as he's getting relief from whatever system we are using. And remember one thing that's most important, that is a scientific system. It has stood the test of time, and it is scientific. Keeping that in mind only, I started my intrigue and my journey into acupuncture. And in 2003, we got the first order from our Government of India, Ministry of Health, which allowed acupuncture to be practiced only by qualified medical practitioners in India, which meant that only allopaths and Ayush doctors could practice acupuncture in India after doing a proper certificate course. However, by the year 2015-16, I started getting a lot of requests from dentists and physiotherapists saying that, look, world over, even dentists are using acupuncture for facial pain treatment, for even for tooth extraction in patients who have issues with reactions to the anesthesia. That means they are allergic to anesthetics. So if you could put just two needles on the face at specific points, connect these needles to an electroacupuncture stimulator, that entire area becomes numb, and you can immediately do a tooth extraction without any pain whatsoever. So uh, they wanted to learn that. So we contacted the ICMR, which is our nodal body in India, in Delhi, and they were very good enough, and they said, okay, we will look into this. You have to give scientific presentations on that. I gave all that, and finally, in 2016-17, we got the order passed, which included dentists also, who were allowed in India to practice acupuncture. Thereafter, in 2018, the physiotherapist group came to us because they said that, look, our basic knowledge of anatomy physiology is also very good. So, and worldwide, physiotherapists are also being allowed to practice acupuncture. So, you should also allow us. So, again, Dr. Katoch was the DGICMR at that time. And again, I was made to go through with the ritual of doing all the scientific presentations before a expert committee, which included doctors from the AIMS, from PGI Chandigarh, from CMC Ludhiana. It was quite a wide variety of allopath doctors who were there in that team. And finally, they were all convinced that, look, acupuncture should be allowed to practice by physiotherapists also. So 2018, we got that order passed. Within that period of time, we realized that the most important factor which was missing was that we did not have too many, because whatever workforce we were creating today was only of people who already were practicing some system or the other. Say, for example, I am a doctor of general medicine. There is another doctor who is a doctor of, say, Ayurveda. There's another doctor who is a physiotherapist. So he already has a practice on which he is subsiding himself on. So he was learning only acupuncture as an additional tool.
this was not his only system of practice. And what would then happen would be that his concentration or his basic output of patients would be very limited, because he would be using his main science much more. So when I realized this after my traveling all over the globe, that there in US, UK, Australia, Canada, they had started off after class 12 a 5.5 year degree course on acupuncture, just like we have our undergraduate medical system. So they also have an undergraduate system. But for acupuncture, they did it after class 12, just like we do it after class 12. And in the first 4 years, they had the basic sciences like anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, everything. And only in the last 1.5 years, they were taught acupuncture. And I went to these colleges, saw for myself the great facilities available, the type of teachers. They were actually MD anatomy doctors who were teaching these students. So that gave me a lot of enthusiasm, that why is it that we in India are lacking behind? So I took this project up with the government of India. An interdepartmental committee was formed under chairmanship of Dr. Katoj, who had retired by then from SDG ICMR. This committee went into all alternate systems, not only acupuncture, but I should feel blessed that other than acupuncture, no other system was accepted by this committee. And acupuncture was accepted as a viable system of modality of treatment. And in 2020, February only, an order was passed by the government of India accepting acupuncture as an independent system of medicine in India. Uh, Subsequent to that, an apex committee was formed with Dr. Katoj as the chairman. I am as the vice chairman, and we had experts again from all over the country who were members of the committee. And we all sat down and formulated the entire course curriculum, which would be followed once these courses are started in colleges in India. So we have gone a long way down, and we have done a lot of work as far as the promotion of acupuncture in India is concerned. And I'm quite hopeful that, like in Western hospitals, in India also, very soon we would be able to see much more work in acupuncture being done, and much more scientific work, and much more papers coming out, scientific papers coming out from India also. Because I find that since there was not much of support from the government of India, that is why there was not much scientific work being done from India also. So I'm quite confident that with the support which we are getting from this government, we should be able to promote it.